यार आंध्रा में गए थे, जयती एक जगह है, बहुत ही रिमोट एरिया है। तो वहाँ पे विघ्नेश्वरा टेम्पल घूमने गए थे 2 साल पहले, जब पहली बार हमने लंबा टूर किया था। तो तब जिस रोड से हम गए थे, इतना सुनसान रोड और एकदम गांव के बीच में से, बिल्कुल वैसा वैसा फीलिंग आ रहा है। ये भी बिल्कुल बहुत सुंदर रोड है, एकदम गांव के बीच में से। Hi friends, part 6, and here I continue my coverage of Balod Pathadi temples along with the ancient Jain temple. On way to Iran, we encountered Badho Pathagi. It came as a surprise. We were moving to Iran from Gaya Raspur when we suddenly noticed the direction for Sola Khambi. We decided to explore a bit, and it was really a blessing in disguise for us. Not in plan, we couldn't explore much, but definitely few of them we did were worth. The Badho Pathari temple group, as we found out later in Madhya Pradesh, is a significant archaeological site featuring numerous Hindu and Jain shrines built mainly between the 9th and 12th century CE, showcasing unique architecture like the 8-shrine Gadarmal temple and complex of converted Hindu Jain temples, reflecting a rich history as an ancient trade and religious hub with Gupta era connections. Badho and Pathari refer to twin villages in Vidisha district in the ancient trade routes. The site contains monuments with major construction from the 9th to 12th century CE, with roots in the earlier Gupta era 4th to 6th centuries. Architectural styles are very unique, including multi-shrine temples with some originally Hindu but later adapted for Jain worship. A notable structure uniquely designed with 8 shrines around a central Panchayatna 5-shrine core noted for its grand ruined gateway Torana is the Gadarmal temple we could not visit, of course. The Jain temple is a cluster of about 25 smaller shrines showing complex designs and featuring various Jina Tirthankara images. Historically, the villages were important religious and commercial centers, offering insights into the development of Hinduism, Jainism and early Indian history with evidence of human activity from much earlier periods. Visitors find a large complex of ruined temples with intricate carvings, architectural remnants like stepped wells, baulis, and a mix of Hindu and Jain iconography, all within a settling of historical importance. The site offers a glimpse into medieval Indian temple architecture and religious transitions. While we were not aware of the place, we suddenly noticed and visited only couple of, but we did explore the area for our future visits. প্রত্যেকটা চেম্বারে তীর্থঙ্কর আছে না? চল চল চল, তোদেরকে নিচ্ছি।
हिंदी। I think the Solakhambi is quite far and it is not possible to visit that, but it looked like a very beautiful temple from this distance, an ancient temple. So maybe sometime later in future we will plan to visit that temple. Otherwise we will become late, we will get late for Iran. So we'll see sometime later. This is the Solakhambi at Baroh Pathari. Very interesting route. I mean, it's very narrow. I was afraid whether car will go. Now this is fine, I could reach this, but from here मैं यहाँ से एक और मंदिर देख पा रहा हूँ पुराना, जो कि काफी दूर लग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे कैसे जाना है। वो देखिए, को दिखाई दे रहा होगा मंदिर, ये यहाँ पे
ये 16 खंबा का ये रोड है। इसी रोड में आगे एक और मंदिर है, मैं जा नहीं पाया, गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल जाना पड़ेगा। उधर पहाड़ी के पीछे एक और मंदिर है। अभी मैं उस वाले मंदिर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हमने पहले देखा था, जो ड्रोन से दिखाया मैंने। वो एक लोकल ने बोला कि वो गाड़ी जाए, वो एकदम सीधा रास्ते में है। सो दिस इज द रोड टू 16 खंबा। दिस इज फॉर एक्सप्लोरेशन इन फ्यूचर। बहुत नैरो रोड है ये। थोड़ा सा रिस्की भी रोड है, लेकिन इट्स वर्थ। Our next destination from here on, the Iran archaeological site. एक बार आंध्रा में गए थे, जयती एक जगह है, बहुत ही रिमोट एरिया है। तो वहाँ पे विघ्नेश्वरा टेम्पल घूमने गए थे 2 साल पहले, जब पहली बार हमने लंबा टूर किया था। तो तब जिस रोड से हम गए थे, इतना सुनसान रोड और एकदम गांव के बीच में से, बिल्कुल वैसा फीलिंग आ रहा है। ये भी बिल्कुल बहुत सुंदर रोड है, एकदम गांव के बीच में से। Friends, I finished part 6 here, just to continue with Iran in the next part. Till then, do take care of yourself and bye for now.